ये मुझे लगता है कि सर आपके ये कीबोर्ड का एक्सटेंशन है। आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं ये कीबोर्ड में एक एक्सटेंशन दिया हुआ है। मुझे लगता है ये आपका वही चीज़ करता है। तो आगे देखेंगे क्या करता है। तो पहले इसका हम यूज़र मैनुअल देख लेते हैं एक बार। तो ये है इसका यूज़र मैनुअल। फिर अगर हम इधर जाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसमें बोल रहा है थैंक यू फॉर द परचेज ऑफ रेडगियर शैडो ब्लेड मैकेनिकल कीबोर्ड। तो गाइस इसका पूरा नाम मैंने नहीं बता दिया। इसका पूरा नाम आप देख सकते हैं इसके पैकेज में, शैडो ब्लेड मैकेनिकल कीबोर्ड। तो गाइस ये वही बोल रहा है कि शुक्रिया कि आपने ये आइटम खरीदा। फिर इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर आप देखें तो देखिए क्या क्या है। पहले तो इसका खुद नाम दे दिया है। दूसरा क्या है, तो इस कीबोर्ड में 104 कीज़ हैं, ठीक है। फिर ये स्विच टाइप आपका मैकेनिकल है जो हमको चाहिए था। फिर एंटी घोस्टिंग है, और कौन कौन है, ऑल कीज़। एंटी घोस्टिंग आपका हर कीज़ है। फिर ये आपका साइज दे रखा है, लेंथ, वेट और हाइट दे रखा है। और ये आपका वेट दे रखा है 1300 ग्राम, ठीक है। अगला पेज देखते हैं। तो ये सब जो है ये आपका जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उसका फंक्शन कीज़ है, मतलब शॉर्टकट कीज़ भी बोल सकते हैं कि क्या करने से कौन सा लाइट बंद होगा, क्या लाइट ऑन होगा, किससे इसका जो मोड है वो रीसेट हो जाए। फिर रोलर मोड है इसमें एलईडी लाइट का। फिर यहाँ पे सेकंड में आप देख सकते हैं कि एडजस्टिंग है ब्राइटनेस का, मतलब आप कीबोर्ड में जो लाइट जलता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि उसका लाइट कितना ब्राइट रहेगा, कितना स्पीड में वो होता है ना कि कीबोर्ड में लाइट ऑन ऑफ होता है, तो वही दिखा रहा है आपको। और फिर ये आपका मल्टीमीडिया शॉर्टकट कीज़ है, मतलब इससे क्या होगा ये आपके लैपटॉप में देखने को मिलेगा कि FN के साथ ये कीज़ दबाने से ये आपके लैपटॉप में ये सारे चीज़ खुलेंगे, तो ये उसके लिए। फिर आपके थर्ड पेज में आता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो नंबर की के साथ इसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका कुछ जो गेम है उसके प्रोफाइल खुलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली एक गेमिंग कीबोर्ड है, तो इसीलिए ये इसमें गेम्स के मोड दिखा रखे हैं। और फिर देखिए ये यहाँ पे लिंक दे रखा है, बोल रहा है कि आप यहाँ से जाके एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। उस सॉफ्टवेयर से आप इस कीबोर्ड का मैनेज कर सकेंगे। फिर आप ये सब देखेंगे तो ये ऊपर देखिए हेडिंग क्या है, सॉफ्टवेयर, मतलब लैपटॉप में या PC में जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ये सब कस्टमाइजेशन जो प्रोसेस है ये सब आप सॉफ्टवेयर से कर सकेंगे, ठीक है।
the face. Tell me that you love me, even if it's fake.